ये कर लेते नहीं पता इतना है yes. So this is our first class for the new batch of UPSC, and in this class, basically, we will introduce psychology, right? And what strategy we should follow while we are going to prepare psychology. And psychology, because there is some students who are not able to understand English, so that I will use to both Hindi and English, right? So here is first thing, while you want to going to prepare optional or the UPSC, so there are the 4 cardinal rules for preparing exam. So 4 cardinal rules for preparing UPSC. If you want to prepare UPSC, you must follow at least these 4 cardinal rules, and these 4 cardinal rules will also apply in the subject of psychology. Like the first rule, our first important rule. Just wait. Like the first important rule is make a good notes. Make a good notes while you are going to prepare UPSC or optional. So you should prepare a good notes. So how we prepare a good notes? This is important for you and me also. अच्छे नोट्स बनाने के लिए जरूरी क्या है? Mostly I always refer to government sources rather than private sources. I always prefer to government. Even in my notes, I used to mostly government sources, such as government websites, government portals. Even you should follow some standard book also while you are preparing UPSC. So here is what is here. Make a good notes with the help of government sources, with the help of previous toppers. जो previous toppers होंगे उनका भी notes आप use कर सकते हैं. And by the using of all, you can also use standard books also. Standard books अगर आपका मन करता है, so you can also use for the making a good notes, because if you want to crack any exam or you want to clear any exam, what you should follow? Make a good notes. So for psychology also, if you are preparing psychology optional, you should make a good notes. How? With the help of government sources, with the help of previous toppers, with the help of standard books, even by your class notes. With the help of class notes, you need to also develop a good notes, right? And also with the help of you should develop with the help of our printed material. Whatever we will provide you printed material, that printed material you need to use for making good notes. And second rule for preparing a competition is that do revision. Do revision is very important. Or revision without, I think UPSC is very away for the students, those who is not revising properly. Because ये मैंने notice किया है कि बहुत बच्चों ने notes तो बना लिया,
but उन्होंने रिवीजन नहीं किया. Why they don't revise? I think because of their time, because of certain other things with them. अब वो रिवीजन नहीं करते, एक ड्रॉप है. अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो उनकी अपनी वोकैबुलरी नहीं बन पाएगी. मींस विदाउट वोकैबुलरी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक द एग्जाम्स एंड आपके पास में जी इंटेलिजेंस नहीं क्रिएट होगा. As we know that we are psychology optional student, we will study a psychologist name is Spearman. So Spearman साफ कहता है कि we have a two intelligence, one is a G intelligence, other is a S intelligence or specific intelligence. What about UPSC? UPSC is based on mainly G intelligence because आप PT में भी आप देखेंगे 100 क्वेश्चंस हैं. What about the mains? In the mains, there is also 1000 marks. That is totally related to 1000 marks. It is related to again GS. So optional के लिए means specific intelligence for आपके लिए 500 marks है. So ये स्पीयरमैन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिट होता है without understanding of G intelligence. It is not easy to crack the UPSC for anyone or pass the UPSC. और G intelligence बनेगा कैसे by revision of anything again. So उसका G intelligence develop होगा. And third things, if you are going to prepare UPSC, तीसरी बात जो मैं अक्सर क्लास में बोलता हूँ, that is ask your doubt. Ask your doubt. Without clearing of doubts, I think आपकी preparation गलत direction में जाएगी. This is my personal belief also. And why I say to every student, ask your doubts, because what our parents can do. Our parents first sent to school, वहाँ पैसे उन्होंने खर्च किया. Then they send us to college, वहाँ पर पैसे खर्च किया. Then they are sending you coaching. अब आपको कोचिंग के बाद कहाँ भेजेंगे? This is the last option. So if you are not utilizing your last option, so it means you are going in wrong direction. Sir, आप 500 की भीड़ में बच्चों में पढ़ रहे हैं, क्या डाउट पूछोगे? कॉलेज में कुछ डाउट रह गया और प्लस स्कूल में डाउट रह गया, फिर आप 500 की भीड़ में बैठ गए, वहां भी नहीं रहेगा. और इसीलिए हमारे यहाँ स्टूडेंट के नंबर्स 30 होते हैं. बहुत बड़े नंबर्स में स्टूडेंट को नहीं रखते इसमें, राइट. और जो भी बैच हमारे चला उन बच्चों से पूछेंगे. आई आस्क क्वेश्चन एवरीवन. आई आस्क वन डे वन स्टूडेंट सेड सर आप मेरा नाम लेते मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैंने कहा नहीं भाई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट कि if they must interact with the teachers. उसको टीचर्स इंटरेक्ट होना चाहिए. So ask your doubts. This is a third important rule for the preparing of optional. So another is rule number 4 is if you are going to prepare UPSC, so practicing question paper, right? So practicing question paper is very important. Practicing question paper is very important. If you are not practicing question paper for the UPSC, it means आपका प्रिपरेशन क्या लेवल है, किस लेवल पे किया है, वो कभी भी you will not be able to reach properly, or you will be not able to understand exactly what UPSC want. So you should must follow these 4 cardinal rules while you are going to prepare UPSC. 4 रूल को आपको जरूर क्लास में फॉलो करना है या प्रिपरेशन के समय जरूर ध्यान रखना है. रूल नंबर 1, फर्स्ट इज मेक अ गुड नोट्स. रूल नंबर 2, डू रिवीजन. रूल नंबर 3, ask your doubts. Rule number 4, that is practicing question paper. You may ask what type of practicing question paper. So there is basically 2 type of practicing. One is PYQ, that is previous year question paper. Other is some new and expected question paper based on current affair, based on your experts understanding, based on your even intuitions also. अपने इंट्यूशंस का यूज करके पीवाईक्यू जरूर करना चाहिए, कुछ नए क्वेश्चन जरूर करना चाहिए. सो you should must follow
while you are preparing optional, these four rules. These four rules are very important for the preparing of optional. ऑप्शनल के समय इन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है. आई विल रिपीट दिस लाइन. एंड नेक्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू से एट हियर, दैट इज इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर यूपीएससी, सो इसमें क्या चीज, और साइकोलॉजी ऑप्शनल को प्रिपेयर करने चल रहे हैं, सो क्या चीज जरूर रखें. एज आई ऑलवेज सेड टू यू, as I always said to you, few things जो मैं अभी एक बोलना चाहता हूँ. You must understand one thing, that is aptitudes, other is attitudes. Other is attitude. So what is difference between attitude and aptitudes? You must understand. Why I am saying this? Because हो सकता है ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे और बहुत समझने के लिए हेल्प है. So here I will tell you two differences. First difference, attitude and aptitude. After this, I will tell you the difference between knowledge and understanding. So what is aptitude and attitude? Aptitude is basically potential for future. What is it? It is a potential and potential for future. This is for future, and this you can say interest plus potential is equal to aptitude. किसी भी ह्यूमन बीइंग में किसी भी चीज को लेके इंटरेस्ट है प्लस उसका एक अपना पोटेंशियल है, वही उसका एप्टीट्यूड. It means you can take example. Suppose you are interested in doing public service, और आपको आगे मौका मिल जाए और आप 8 घंटे 12 घंटे 20 घंटे पब्लिक सर्विस कर रहे हो, पूरी लाइफ पब्लिक सर्विस कर रहे हो, सो दैट इज योर एप्टीट्यूड. एंड व्हाट अबाउट द एटीट्यूड्स? एटीट्यूड इज बेसिकली that it reflects our present as well as past also. ये हमारे प्रेजेंट और पास्ट को दिखाता है. मींस attitude is basically acquired. We can say that जो aptitude is basically inborn. But what about attitude? It is basically acquired. Why I am saying acquired? Because जो aptitude है वो कोई किसी के देने से नहीं लेता. Aptitude is एक inborn ability. Attitude तो देखने से आता. Suppose in my family most of the members are medical family, so धीरे धीरे मेरे अंदर मेडिकल वाला एप्टीट्यूड आ सकता है एंड एटीट्यूड आ सकता है. मे बी in my family most of the people are political backgrounds, तो ऐसा भी हो सकता है कि पॉलिटिकल एप्टीट्यूड आ जाए. सो एप्टीट्यूड इज बेसिकली व्हाट? एक्वायर्ड. ये एक्वायर्ड है, किसी के देने से नहीं आता, बल्कि ये जो आता है एप्टीट्यूड जो होता है एक्वायर्ड है, मींस किसी के देने से आता है या किसी के साथ रहने से आता है. सो राइट. एंड नेक्स्ट थिंग इज एट एप्टीट्यूड विल प्रोवाइड यू प्लेजर. ये आपको हमेशा याद रखना, इट विल प्रोवाइड यू प्लेजर. व्हाट अबाउट इट? नॉट नेसेसरी. एटीट्यूड नहीं होता. और एटीट्यूड को अगर थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, सो इन आवर लाइफ देयर इज अ बिलीफ. In our life there is a belief. Belief is a source of value, and value will create our attitudes. तो हमारी जिंदगी में जो हमारे beliefs होते हैं, belief is a source of value. So value means degree of importance, and this value will create our aptitudes. I will take an example, very simple example. एटीट्यूड का बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं. बिलीफ. सपोज यू बिलीव इन गॉड. अगर आपको गॉड में बिलीव है, यू बिलीव इन गॉड, सो गॉड को बिलीव है, इसलिए हो सकता है कोई भी आप उनका एक हॉली प्लेस देखे, कोई भी मॉस्क देखे, टेंपल्स देखें, यू मे वॉच समथिंग अदर, कुछ और भी चीज हो सकता है आप देखें,
सो हो सकता है आपने एक टेम्पल देखा या मॉस्क देखा और उसको देखने के बाद उसकी वैल्यू आपके पास कम रहेगी या ज्यादा? डेफिनेटली हाई. It means if your belief toward God is positive or high, then definitely your value toward the temple will be high. Right? Another is एप्टीट्यूड. आप इसी से क्या बनेगा? मॉस्क के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा होगा? पॉजिटिव. गेटिंग? कोई मस्जिद देखोगे, मंदिर देखोगे तो आपका जो एटीट्यूड होगा पॉजिटिव. सो एटीट्यूड्स हमारे बिलीफ. जैसे इमेजिन करो हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर वाचिंग लाइव टू मी, दे डोंट नो मी, वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता. सो निश्चित तौर से हमारी वैल्यू क्या है? लो. और फिर एटीट्यूड कैसा होगा? मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. मोस्टली नेगेटिव हो सकता है. अगर हम अपनी माँ का एग्जांपल ले, मदर, वी बिलीव, वी नो लॉट अबाउट मदर्स, तो मदर के वैल्यू कैसी होगी? वेरी हाई. और मदर की वैल्यू हाई होगी, इसका मतलब टुवर्ड द मदर व्हाट विल बी आवर एटीट्यूड्स? एटीट्यूड विल बी पॉजिटिव. गेटिंग माय पॉइंट्स? तो जो बिलीफ बनता है, बिलीफ से ही वैल्यू बनता है, उसी से एटीट्यूड बनता है. और एटीट्यूड्स इज बेसिकली not a permanent thing. It will change, and you can note down, aptitudes will not change, will not change. और एक इंसान में एक से ज्यादा भी एप्टीट्यूड्स पा सकते हैं. बट what about attitudes? It can be changed. ये बदल सकता है. आज आप, if you are living in between the chore, so choro वाला aptitude, if you are living in between the UPSC aspirants, UPSC aspirant वाले attitudes आ सकते हैं. So attitudes can be changed. Why I am saying all this? If अगर आपके पास पब्लिक सर्विस एप्टीट्यूड होगा और अगर पब्लिक सर्विस एटीट्यूड होगा, सो आपके आंसर्स कभी भी अच्छे नहीं होंगे. अगर पब्लिक सर्विस एप्टीट्यूड होगा, योर आंसर विल बी ऑलवेज गुड. योर vocabulary will be always related to public life. Similarly, if you love and like psychology as an optional, so आपको इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा. Right? Because वो आपको प्लेजर देगा, वो मजा आएगा. I know many professors in my life जिन्होंने अपने सब्जेक्ट को एंजॉय किया. Like सचिन तेंदुलकर have playing aptitudes. उनको प्ले करते थे, बॉल को एंजॉय करते थे, रन बनता था, रन बनेंगे, फैन बनेंगे, फैन बनेंगे, पैसे बनेंगे. लता मंगेशकर गाने को एंजॉय करती थी, धीरे धीरे फैन बने, पैसे बना, नाम बना, सब बन गया. Many peoples in their fields, they have their aptitudes, so they enjoy their life. So I want to say shortly, if you are going to prepare UPSC, you should prepare according to your aptitudes rather than attitudes. I want to take other example also. That example is very popular. 3 Idiot movie. There was two boy. One is Ranchod Das, whose actual name was Musu Pangdu. उसको क्या था? उसको इंजीनियरिंग, उसको पैशन था, मजा आता था. उसके लिए डिग्री मिले मैटर नहीं था. उसके लिए ये भी मैटर नहीं था कि वो क्या है, लोग क्या कहेंगे, बिकॉज उसको इंजीनियरिंग पसंद थी. राइट? एंड व्हाट अबाउट अदर्स? जो दूसरा था, दैट वाज फरहान. फरहान का एटीट्यूड की वजह से वो आया हुआ था इंजीनियरिंग करने. उसको अंदर से मजा नहीं आ रहा. So if anyone is not enjoying internally any subjects, he will never get pleasures. You can take two great examples. Even I'm a teacher, I cannot speak the name, but I will give you the hint. With the help of that, you will understand whom I am talking. एक ऐसे व्यक्ति जिसके घर में नानाजी प्रधानमंत्री, जिसके फादर प्रधानमंत्री, दादी जी प्रधानमंत्री, समझ गए होंगे.
तो ऑलमोस्ट उनके घर में कैसा एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ड्यू टू दैट उनको भी लगा कि ही विल बिकम अ पॉलिटिशियन। सो एनवायरनमेंट की वजह से जो चीजें आ रही दैट इज एटीट्यूड आता है, अंदर से जो फीलिंग आएगी वो नहीं आएगी। सो इसलिए उनके फॉलोअर भी नहीं बन पाए बहुत ज्यादा। क्यों नहीं बन पाए? बिकॉज अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही। अदर इस दूसरे एक देखो, द पर्सन हुज बेसिकली बैकग्राउंड इज दैट कि उसके घर पे कुछ भी नहीं, ही वाज जस्ट चिलिंग सेलिंग अ टी, बट ही बिकम लेटर प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई एम नॉट सपोर्टिंग टू एनीवन एल्स, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ओनली द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, nothing more than that. So I want to say here, you must understand about your attitudes and aptitudes. अब जबरदस्ती पढ़ने के लिए साइकोलॉजी आ गई, यूपीएससी आ गए, तो वो आपका टाइम वेस्ट है। और अभी से इसको आइडेंटिफाई कर लो। If you love and like to study psychology, it means that there is your aptitudes and that will give you pleasure. तो आप किसी भी ऑप्शनल को चूज करो, उसमें आपको मजा आना चाहिए। ऑटोमेटिकली वर्ड्स विल कम फ्रॉम इनसाइड ऑफ यू, वो अंदर से वर्ड्स अपने आप आएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट एक और मैं डिफरेंस बहुत बताना पसंद करता हूं, इसके बाद फिर आई विल टोटली कम टू द साइकोलॉजी टॉपिक्स एंड आई विल एलाबोरेट बेसिकली द साइकोलॉजीज कॉन्सेप्ट। Here I want to tell one of the difference, that is what is the difference between, you must understand difference between knowledge and understanding. You must have difference between knowledge and understanding. So here is knowledge. Here is knowledge and another is here is understanding. If किसी को मालूम है तो he can even comments, वो बोल सकता है क्या उसको मालूम है, how much या what he know, difference between the knowledge and understanding. So here is, we must understand, knowledge is basically explicit. Knowledge is basically explicit. Explicit means comes by outside. Knowledge कहां से आता है? बाहर से आता है. It means if you are reading books, if you are reading magazine, if you are reading newspaper, if you are reading by any teacher, so all these things, all these people will provide you knowledge. ये आपको सब के सब क्या प्रोवाइड करेंगे? नॉलेज। Get it? And knowledge is basically what? Explicit. बाहर से आता है। And if you are reading books, reading magazines, so knowledge है, टीचर से पढ़े। Suppose I am a teacher, if I am taking class of 30 students, so उसको 30 को knowledge दूंगा मैं। So knowledge comes by outside, and here is, it will create memory. Knowledge will create what? Memory. Knowledge will create what? Memory. Get it? So our memory will expire. Memory एक समय के बाद expire कर जाती है. We call them forgetting. इमेजिन करो कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू आर रीडिंग बुक्स, यू आर रीडिंग मैगजीन्स एंड यू आर क्रिएटिंग मेमोरी एंड दैट मेमोरी विल एक्सपायर। और ये मेमोरी एक्सपायर कर गई एक समय के बाद, और इसके बेस पर क्या पब्लिक सर्वेंट बनाया जाना चाहिए? नो। व्हाई वी शुड नॉट क्रिएट पब्लिक सर्वेंट विद द हेल्प ऑफ नॉलेज? क्योंकि नॉलेज तो टेम्परेरी है। आज आप अखबार पढ़ोगे, आज का नॉलेज आएगा, एग्जाम पास में आ गया, एग्जाम के समय में रीड अ लॉट ऑफ बुक्स एंड डेवलप अ लॉट ऑफ नॉलेज, एग्जाम खत्म, नॉलेज खत्म। गेटिंग?
सो एग्जाम खत्म हो गए, नॉलेज खत्म हो गया। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द मेडिकल, जो हमारे यहाँ पर आज इंजीनियरिंग के बच्चों को काम नहीं, वो इसी की वजह से नहीं, बिकॉज उनको लगा कि कुछ इंजीनियरिंग की चीजें पढ़ लेंगे, नॉलेज आ जाएगी, नॉलेज सफिशिएंट हो जाएगी, वो तो एक्सपायर कर जाएगा सेमेस्टर पास करने के लिए। लाइक व्हेन आवर सेमेस्टर्स ऑफ एनी कोर्स विल कम, सो व्हाट वी डू, हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सेमेस्टर पास करते हैं, डिग्री आ गई, दैट्स ऑल इट। वो चीजें नॉलेज, तो नॉलेज के ऊपर इज यूपीएससी नॉट बेस्ड। आई विल रिपीट दिस लाइन, यूपीएससी इज नॉट बेस्ड ऑन नॉलेज, नॉट बेस्ड ऑन नॉलेज। ये नॉलेज के ऊपर यूपीएससी बेस्ड नहीं है, इस बात को बहुत अच्छे से तैयार कर लो। एंड सुबह से शाम तक आप पढ़ रहे हो, सिर्फ 8 to 9 hours you are paying for the only development of knowledge। 8 से 9 घंटे सिर्फ आप क्या डेवलप कर रहे हो, नॉलेज, और बुक्स पढ़ रहे हो। हाँ, नॉलेज विल हेल्प यू, राइट, नॉलेज विल knowledge, here is Priyansh is saying it is inborn, interest is inborn, interest is not inborn, इंटरेस्ट हो सकता है, इनबॉर्न भी हो, एक्वायर्ड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, राइट। सो दैट अदर इज, तो ये चीजें नॉलेज। एंड व्हाट अबाउट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इज बेसिकली एक्सप्लिसिट, implicit, it is what, implicit, it is implicit, implicit means comes by inside, ये अंडरस्टैंडिंग अपने आप से आती है, किसी की देने से नहीं। सो इट कम्स बाय इनसाइड, और अपने आप आ रही है। एंड इट विल क्रिएट्स आवर कॉन्शियस, it will create our conscious, understanding creates our conscious, conscious means awareness. In a easy words, if somebody asks what is conscious, it means awareness toward any object, toward any stimulus, toward any situation। किसी भी चीज को लेके जब हमारे अंदर अवेयरनेस प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉन्शियस। गेटिंग? सो कॉन्शियस will never expire, will never expire, ये expire नहीं होता, will write here never expire, it will never expire, ये expire नहीं है। Why I am saying this? Just imagine in your life, अपनी लाइफ में इमेजिनेशन करो, even you can take the example of a movie that is 3 Idiots। One Ranchor Das come in that engineering college, so उसके सीनियर्स उसकी रैगिंग करते हैं, एंड रैगिंग करते समय वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट उसने कुछ सॉल्यूशन निकाला, एंड फाइनली ही वाज बेसिकली, वो बच गया, अपने आप को वहां से बचाना सीख लिया। When जब आप देखोगे, जब वो जा भी रहा था कॉलेज छोड़ करके, so there was a dean daughters, he was suffering from labor pain, तो उसने एक माँ और बच्चे की जिंदगी बचाई by the understanding। So in short, UPSC is based on understanding। कोई कितना भी बोले कि जो मैं पढ़ाता हूं वही आता है, it is wrong, because in the UPSC we have noticed basically they ask such question which is even never discussed in some books, never discussed in any forums, that were basically sometimes new topics। तो वो एक नए टॉपिक्स हैं और उन्हीं के ऊपर यूपीएससी पूछ रहा है। तो इन द यूपीएससी इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, तो पीटी में भी आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है,
एंड मेंस में भी आपको किसकी जरूरत है? अंडरस्टैंडिंग. सो यू शुड डेवलप अंडरस्टैंडिंग इन योर सब्जेक्ट. अपने सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग. इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर साइकोलॉजी ऑप्शनल, सो अपने सब्जेक्ट में नॉलेज मत क्रिएट करो. मींस डोंट कलेक्ट लॉट ऑफ फैक्ट्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस. व्हाट यू डू, इवन यू मस्ट डू वन थिंग, सो डेवलप अंडरस्टैंडिंग इन योर सब्जेक्ट. अगर आप अपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके भी जाओगे, सो दैट विल हेल्प यू टू बिकम अ रणछोड़ दास इन योर एग्जाम. तो अंडरस्टैंडिंग बनाओ. अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी? खुद से आएगी. रीडिंग करो. रीडिंग विल हेल्प यू डेवलप अंडरस्टैंडिंग. किसी मटेरियल को बार बार 1000 टाइम्स 100 टाइम्स यू रीड इट, so that will help you to develop understanding. So understanding is important. And without understanding, आपको लगा कि किसी बुक से नोट से पढ़ के, किसी इंस्टीट्यूशन के नेम से पढ़ के you will clear the exam. It is fake, it is incorrect, it is wrong. गलत है, ऐसा नहीं हो सकता. So what we do, we must develop understanding in our subjects. And right now what I will teach you in the psychology, अब मैं जो आपको साइकोलॉजी में बताना चाह रहा हूं, that is not based on the knowledge, that is based on understanding. Right? So आइए साइकोलॉजी में क्या चीज हम करेंगे, and what we should do in the first class, what we need to do actually in the first class, या क्या ऑप्शनल तैयारी करते समय ध्यान रखें. Right now I am coming in psychology optional. So here is, we are going to discuss psychology optional. What about psychology optional? Right? First thing, you must have clarity in a few things. इसके दो तीन पॉइंट्स अक्सर बच्चों में डाउट्स होते हैं, मैं वो डील करना चाहूंगा. फर्स्ट थिंग, why we should select psychology optional? We should select psychology optional. क्यों इस ऑप्शनल को हम चूज करें या कैसे चूज करें? So I want to tell few things right here. अगर आप इसको ऑप्शनल के रूप में चूज कर रहे हो, so इसको इसलिए चूज करो because this will be not only for 500 marks. This is for the actually 750 marks, because this will cover 500 for your optional and 250 for your paper 4 also. So 250 आपके पेपर 4 में भी तो हेल्प कर रहा है. So that इसलिए यहाँ पर इवन you also will get benefit by in your essay also. ये जब आप ऐसे लिखेंगे तो वहां पर में भी उसको आपको बेनिफिट मिलेगा. So while you are writing essay, तो essay में भी आपको बेनिफिट मिलेगा. Instead of that, it is very interesting things are there. साइकोलॉजी ऑप्शनल का एक इंटरेस्ट ये है कि जब आप इसको पढ़ेंगे, so you can connect easily. You can connect easily with the real life examples, right? तो आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं. Another is, while you will become ऑफिसर्स, तो अगर आपका पीआर अच्छा बनाना चाहते हो, पीआर मींस पब्लिक रिलेशन. आई नो मेनी ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, they even qualified the means PT and so many, because I had taken several interviews. So I noticed them कि उनका पीआर अच्छा ही नहीं, पब्लिक रिलेशन नहीं है. वो एरोगेंस, क्या गजब इंजीनियरिंग का एरोगेंस. सर यू आर पब्लिक सर्वेंट. तो पब्लिक और सर्वेंट के बीच में रिलेशंस में जितना डिस्टेंस क्रिएट होगा, वो डेफिनेटली नॉट फॉर गुड फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी. सो वो तो कोई सेलेक्ट, तो इसलिए पीआर अगर अच्छा बनाना चाहो इसलिए करो. एंड व्हाट अबाउट इंटरव्यू?
इंटरव्यू में यू नो दैट वन इंटरव्यूअर आउट ऑफ फाइव, फाइव में से एक इंटरव्यूअर जो होता है वो साइकोलॉजी का होता है, सो देयर विल बी आल्सो बेनिफिट. अदर थिंग इज सिलेबस. Syllabus is very interesting. All its paper one syllabus are, नाम सुन के आपको मजा आएगा. What is the name of topics? Like learning. It is very curious topic for us कि learning कैसे होती है. Thinking. What are the way of thinking? And what are the other topics? Memory. How to improve memory. Intelligence. What is intelligence? How we can improve our intelligence? All these topics are very interesting. Personality. Even if you will understand personality of uh, yourself, even of others also, so आपको ज़्यादा मजा आता है. So I want to say one thing कि हमें जरूरत क्या होती है. हमें जरूरत इस बात की होती है कि हमें अपने इस सब्जेक्ट को एंजॉय करना चाहिए. Even we need to enjoy only this subject. Syllabus is very small. Syllabus is only 40 minutes are there. And even you will see the PYQ means previous year questions. Most of the topic comes from only, सब कुछ उसे के जो वर्ड्स लिखे वहीं से पूछे गए. Right? So syllabus is small. Another is connection बहुत अच्छा बनेगा इससे. That is connectivity. Connectivity with second paper will be good because educational psychology, if you have understanding about the theme of education, so education psychology is good. Then rehabilitation psychology, then vulnerables के लिए media, right? Other is India. So all these बहुत second topics में बड़े interesting topics होते हैं. So first जो segment में पढ़े वो भी directly काम आ रहा है. Second को समझने के लिए बहुत effort नहीं लगाना पड़ रहा है. So इसलिए इस subject को select करना चाहिए. And what about score? Score wise अगर आप देखिए UPSC punish few subject every year, और psychology right now not a punished subjects. अभी इसका आगे स्कोप है बहुत ज्यादा, because of that as a situation will arise, psychology की work and demands will also increase. We will deal, अभी थोड़ी इस पे हम आएंगे, बात करेंगे. Then how to study. This is one of the other drawback. इसकी स्टडी कैसे करें? Definitely you should start its preparation by, if you are fresh, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो you should go by which everyone says, वही मैं भी बोलूंगा, that is from NCERT. There is nothing new. Right? तो उस NCERT का सहारा लें. Instead of that, some standard books, and then is by the class notes. वैसे you know what about my classes nature? Those who had studied, they know that जिस लेवल पे क्लास होती है उस लेवल पे बुक में नहीं लिखना. Right? If you want to check that, you can go to check any of our lectures, previous lectures. Like if I have taught at their if I taught the Sigmund Freud, उस लेवल पे बुक में नहीं लिखा होगा, because of my understanding. So I have developed understanding over my subjects. So I believe in my student, they also develop understanding in their subject. Getting? तो जरूरी क्या है कि आपको क्लास नोट्स को जरूर ध्यान से पढ़ें. You must read class note very carefully and very attentively. This is very important for you. Instead of that, you should follow basically government sources. अब आप देखिए, जैसे मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, mostly my notes are based on government sources, NCERT,
क्लास नोट तो खैर मेरा खुद का, आई डू नॉट इवन जब मैं स्टूडेंट लाइफ में रहा होगा तो जरूर पढ़ा हूँ सारी बुक्स, बट राइट नाउ अभी मैं गवर्नमेंट सोर्स को ही प्रेफर करता हूँ, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ टू राइट। अच्छा, इसके लिए अगर आप कितना आर पढ़ें, ऑप्शनल, दिस इज अदर क्वेश्चंस एंड डाउट्स फॉर स्टूडेंट, कितने घंटे पढ़ना चाहिए ऑप्शनल को? आई थिंक इफ यू आर इन क्लास, सो क्लास विल बी 2.5 आवर एंड 1 घंटे आप 1 आवर रिवीजन करने के लिए ले लो फॉर द रिवीजन। एंड आई ऑलवेज से टू माय स्टूडेंट्स, सर्फिंग जरूर करो, सो हाफ आवर सर्फिंग कर लो एंड 1 आवर कुछ नया पढ़ लो, कोई बुक से, दैट इज 1 आवर। सो अगर इसके अलावा भी आप 2.5 आवर देते हैं आफ्टर द क्लास, सो दैट विल बी सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू मी, वो सफिशिएंट हो जाए। गेटिंग? सो 2-2.5 घंटे की क्लास, उसके बाद 2-2.5 घंटे आप अपने आप से पढ़े, दैट विल बी सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू मी। एंड नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू राइट, व्हाट टू राइट, राइट, या हाउ टू प्रिपेयर नोट्स ऑल्सो, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, ये बहुत बड़ा इशू है। एंड व्हाट टू राइट एंड हाउ टू, इसके ऑप्शंस को लिखें कैसे भी बहुत है। इवन फॉर दैट, उसके लिए डिटेल आई हैव टेकन मेनी सेशन, like in a psychology optional, do not write common sense word, common sense word, because some people believe they can answer on the basis of common sense। कॉमन सेंस के ऊपर साइकोलॉजी बेस्ड नहीं। इवन इन 2021 यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, some people believe that it is a subject of common sense and intuition। No, psychology is not a subject of common sense and intuition। तो जब आप प्रिपेयर करें तो इसमें कॉमन सेंस वाली बातें बिल्कुल मत सोचें। साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी, right? It is based on scientific study, proper scientific study के ऊपर based है। There are the many theories, many concepts. What I have calculated that approximate 178 plus theories in total psychology, but and 130 plus psychologists. But for UPSC, 30-40 psychologists पूरी पढ़ लेंगे, that will be sufficient। Only 30 to 40 psychologists required, only 100, or you can say less than 100 theory। Less than 100 means if you are preparing 90 theory, 90 theory means 2 दिन में एक theory, तो भी आप 6 month में आराम से बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। So I want to say कि psychology is not a common sense, it is scientific in nature, it is a scientific subject। Other things, and you should also develop its vocabulary। साइकोलॉजी की अपनी खुद की vocabulary है, that is very important while you are preparing। so आप इसकी अपनी vocabulary को जरूर ध्यान से सुनो, right? so if you are preparing notes, if आप अगर जनरल vocabulary से साइकोलॉजी को लिखोगे कभी मार्क्स नहीं आएंगे। इसीलिए मैं हर क्लास में या इवन हर यूनिट में पढ़ाने से पहले व्हाट आई टू डू, आई यूज, मैं उस सब्जेक्ट की वोकैबुलरी बताता हूं। इवन इफ एनी ऑफलाइन स्टूडेंट, जब आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो मैं आपको एक पूरी प्रिंटेड वोकैबुलरी देता हूं कि व्हाट इज बिहेवियर, व्हाट इज दिस एंड दिस, बिकॉज़ साइकोलॉजी की कॉपी जो भी मैंने चेक की उसमें मैंने नोटिस किया कि द स्टूडेंट्स, they have knowledge even but their vocabulary is not, because they, UPSC ने थोड़ी ना कहा आप ऑप्शनल साइकोलॉजी पढ़िए। it is decided by you are going to study psychology, उसके पास 30 प्लस ऑप्शनल है, उसमें से आपने चूज किया और जिस सब्जेक्ट को चूज किया उसकी vocabulary तक नहीं मालूम आप, how you will source your expertise in that subject। तो वोकैबुलरी जरूर आप अच्छी बनाएं अपने सब्जेक्ट में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंस्टेड ऑफ दैट आई यूज्ड टू ऑलवेज से अंडरस्टैंडिंग।
अंडरस्टैंडिंग बनाए, ना कि किसी की कॉपी को नोट्स में एज इट इज कॉपी करें या उसमें कोई फेक फर्जी इंफॉर्मेशन राइट इन योर कॉपी, right? So few more things we will deal, but right now we need to also come to the main topic: what is psychology and what we must to study in psychology. तो साइकोलॉजी में मैं इससे पहले मैं डिफाइन करूं कुछ और बताऊं, आई यूज टू यूज स्पीक एटलीस्ट I used to speak at least 4 words. That first word is that first word is psychology is a son of capitalism. Psychology is a son of capitalism. What is the meaning of it? Psychology is son of capitalism. Capitalism is high paisa, high paisa, high paisa, high. Even in technical words, when everyone move behind the money or run behind the money, so that is capitalism. Capitalism basically has 3 words. One is market, other is profit, other is privatize, privates. So capitalism के 3 बड़े words. And right now, our economic system and the world economy, even capitalism is a source of psychology. First, capitalism comes in Europe and America. So that first psychology grown in Europe and America. Capitalism means things goes to privatize. चीजें प्राइवेटाइज हो जाएगी, इनसिक्योरिटी अपने आप पैदा हो जाएगी. आपको बहुत देर तक मोटिवेट रहना पड़ेगा, मोटिवेशन बहुत ज्यादा चाहिए हो. Even your boss will motivate daily. So motivation topic यहाँ से. If things will go automatically, यहाँ स्ट्रेस आए, एंजाइटी आए, फियर बना रहेगा, इनसिक्योरिटी बनी रहेगी, नीड्स के बारे में आपके थॉट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बिकॉज ऑफ द प्राइवेटाइजेशंस. So psychology basically grown by the privatizations. प्राइवेटाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, अपने आप साइकोलॉजी का बढ़ेगा. Like you can take the example of UPSC competition. In the UPSC competition, इतनी सी फॉर्म, इतने resources, only small amount of resources. Competitors are very high, aspirants are thousands. इसलिए UPSC टफ एग्जाम है. Resources are very limited, aspirants are high. So इसलिए वो दिन रात पढ़ना पड़ता है, करके पढ़ो, कुछ भी करो, बट रिजल्ट निकलना चाहिए. रिजल्ट निकालने के लिए पूरी एफर्ट्स लगाते हैं बच्चे. Why they are doing so? तो वो एक because of insecurity. And when the profit will be there, प्रॉफिट होगा, एक्सप्लॉइटेशन टॉपिक अपने आप आ जाएगा. मार्केट होगी, सो नथिंग इज परमानेंट. सो मींस यूरोप एंड अमेरिका में कैपिटलिज्म जैसे जैसे ग्रो किया, तो साइकोलॉजी अपने आप वहां पर ग्रो करती चली. बेसिकली आई वांट टू से कैपिटलिज्म इज अ सोर्स ऑफ साइकोलॉजी. एंड इफ यू वॉच केयरफुली, the one of the important incidents which has taken place in the pandemic period. Pandemic में भी तो यही हुआ. जिसके पास पैसे थे वो परेशान नहीं हुआ. The person who don't have savings, the person who don't have money, he was very much under stress, और वो बहुत स्ट्रेस में आया. और जैसे जैसे लोग मनी के पीछे भागेंगे, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन अपने आप आएगा. So work and scope of psychology will automatically grow.
So psychology basically grow as capitalism will grow. Getting? Second line which I used to teach in the class, that is, even this is psychology. Psychology is a subject of individual. Is a subject of individual. ये individual का subject. Psychology deals with individuals rather than groups. Like a medical science. Like a medical, if you will go to consult any doctor, doctor will never ask you come in a bunch, come in groups. Doctor always ask to you come one by one. Same as if you want to understand psychology of anyone, you should consult one by one. Because one person's mental process will be different to other person. One person will be different to others. So psychology deals with the individuals, and most of the research and most of the studies, psychology की ज़्यादातर study किस पे based है? Individual, like Pavlov's, Skinner works, Thorndike's work, all of the works based on individuals. Other is psychology's most of the studies जो individual पर based हैं, most of the experiments based on individuals, and most of the concepts, but because there are the two universal reality. Which two universal reality? That everyone made by self. अगर वो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर एक साइकोलॉजी जरूर होगी. So these psychological rules and biological rules are universal, and these rules are mothers of all other rules. जिसने साइकोलॉजी के रूल्स नहीं सीखे वो बाकी रूल्स सीख ही नहीं पाएगा. Very complicated. Entire history is based on rule of psychology. Rana Pratap's psychology was different from Aurangzeb's psychology. Geography influenced our psychology. So what is important for us? Second point मैंने बताया, psychology is son of psychology subject of individual, and third I want to tell you that psychology is basically contemporary subject. Is a contemporary subject. It is a contemporary subject here. So what is contemporary? Psychology deals with present. Psychology present के साथ बात करता है. Like a medical science. If you will go to consult any doctor, said sir yesterday I was suffering from fever but right now I am okay. तो बोलेगा क्यों आए हो भाई आप? Why you are coming? What is reason? So psychology, right? Right. So it is important for us कि जो psychology है वो इंडिविजुअल का सब्जेक्ट है और ये कंटेम्पररी का सब्जेक्ट है. आज का स्ट्रेस, आज की बात करें, मेडिकल साइंस की तरह है. मेडिकल साइंस डील विद मेडिकल रियलिटी, राइट. मेडिकल साइंस डील विद मेडिकल रियलिटी. Same as psychological science deal with psychological reality. So it is important for us कि psychology individual का subject है, psychology contemporary का subject है. And fourth point, psychology is a normative science. I will repeat this line. Psychology is a normative science. Psychology is a normative science. Psychology is a normative science. Next is fourth point. Psychology is
Normative science. Normative science. Initially, anyone can tell how many types of science are there? There is basically two types of science. There is basically two types of science. One is science two type. One is pure science. One is pure science. Pure science means what is. Pure science means what is. It means whenever any things have a single reason. जब किसी चीज का एक रीजन होगा तो प्योर साइंस. एग्जाम्पल, you can take the example, suppose physics. Physics is pure science. And chemistry is a pure science. Biology is a pure science. Because in a pure science there is a single reason behind anything. लाइक न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा, उसका रीजन ग्रेविटी. वो हमारे भी सर पे गिरेगा, कुछ और भी गिरेगा, उसका रीजन ग्रेविटी. सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्योर साइंस. और प्योर साइंस में सिंगल रीजन. प्योर साइंस मींस सिंगल रीजन. एंड व्हाट अबाउट नॉर्मेटिव साइंस? Normative science means here is normative science. Normative science means normative science. It means what ought to be. What ought to be. क्या हो सकता है? Whenever anything has more than one reason. Whenever anything have more than one reason, किसी भी चीज में जब एक से ज्यादा रीजन हो जाएगा, what is that? Normative. So normative science means based on certain norms. Like social science or sociology. Sociology is basically normative science. Political science is normative science. Psychology is what? Normative science. It means psychology do not have a single rules. Psychology do not have a single theories. अब कोई पूछे साइकोलॉजी में बहुत सारी थ्योरीज क्यों है? सर साइकोलॉजी प्योर साइंस तो है नहीं, उसका एक रूल होगा. If somebody asks कि why many definitions in psychology, sir, because psychology is a normative science. Psychology is not a pure science. जो प्योर साइंस होता है उसका सिंगल रूल्स होते हैं. बट इट मींस व्हाट इज हियर? साइकोलॉजी में बहुत सारे, अब क्या बनेंगे? बहुत सारे अप्रोच. So in a psychology there is how many approach? There is approximate structuralism से लेकर के structuralism to multiculturalism. There are 10 approach. So 10 approach क्यों हैं? Because of psychology normative science. Other is there is some multiple theories. बहुत सारी theories क्यों हैं इसमें? Psychology have many theories. Why there is many theories? Because of normative science. Why many definition? इसमें क्यों बहुत सारी definitions हैं? क्यों बहुत सारी definitions होती है ना psychology? Yeah, because of normative science. Because of normative science. सो अब किसी भी बुक्स में अगर साइकोलॉजी की बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ते हैं, सो दैट आप कभी भी उससे होपलेस पैनिक ना हो. आई वांट टू से वन थिंग एट हियर. देयर इज वन ऑफ द फेमस स्टोरी.
With the help of that story, I think I can correlate with the psychology subject. That story is related to Milind Pannu. This text is related to Buddhism. In this, in that text, there was a story of a village. बुद्धिज्म से रिलेटेड जो बुक्स में स्टोरी है, इन द विलेज देयर वाज सम मैन, कुछ लोग थे और वो कुछ जो विलेज के लोग थे उनके विलेज में एक हाथी गए और किसी ने उसका टेल पकड़ा, किसी ने उसका ट्रंक पकड़ा, किसी ने उसका लेग पकड़ा, किसी ने उसके ईयर को पकड़े। तो जो जैसा पकड़ा उसने वैसा बोला। सेम एज साइकोलॉजी, because psychology is intangible, nobody can touch, so that the person who had worked in the field of psychology, on the basis of their work and experimentation, they have explained their theories and their views also. तो साइकोलॉजी की थ्योरीज इसीलिए बहुत सारी इसमें ओपिनियंस बनते हैं, क्योंकि जो जैसा बता पाया वैसे बताया। स्ट्रक्चरलिज्म व्हाट सेड स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस, बिहेवियरिज्म कुछ और कह रहा, फंक्शनलिज्म कुछ और कह रहा। Getting? So everyone have different perspective, different opinion toward psychology. So it is important for us, right? It is important for us. What is important? What is important for us? Here is 4 rules basically we understand. First rule is psychology is what? Psychology is a son of capitalism. Second is psychology is a subject of individual. Yeah, psychology deals with individuals. Third, psychology is a contemporary subject. Fourth, psychology is a normative science. Psychology is not a pure science. It is what? Normative science. Getting? So after understanding this, we must try to understand the meaning of psychology. We must try to understand the meaning of psychology. What is meaning of psychology? Meaning of psychology. Meaning of, even I will write full psychology. What is meaning of psychology? Here I use two words. Entire psychology I like to explain in only 2 words. The first word is psychology is study about mental process. Psychology is study about mental process, and second is what? Behavior. It is study about behavior. So mental process and behavior. What is mental process? Mental process means those processes which are not directly visible. Like you will see, what is our perception? Perception is visible? No. What is our attention? Attention is visible? No. What is our learning? It is visible? No. What is in our memory? मेरी memory में क्या चला? It is visible? No. What I am thinking? It is visible? No. How I solve the problems? It is visible? No. What is my intelligence? It is visible? No. What is in my motivation? मेरे motivation में क्या है वो दिखाई पड़ रहा है? नहीं. What is in my emotion? It is not visible.
all the mental process are basically not directly visible. So all these mental processes are basically visible. All these mental processes are visible into where? It is visible into our behavior. There is a song, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा. Sir, all things are visible in our behaviors. सब कुछ. So behaviors are over time cohorts given in NCERT. So B is equal to, our behavior is just product of heredity as well as environment. Our behavior दो चीजों से बना है. First is what? Heredity. Heredity. S for heredity. And E for environment. Environments. Our behavior is just product of heredity as well as. It means, इसका मतलब ये हुआ, if अगर हम किसी पर्सन का क्या समझ जाए कि उसके हेरिडिटरी कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, and which hereditary components deal by psychology. First is brain, second is genes, third is hormone, and fourth is neurotransmitters. Neurotransmitters. All these components deal by psychology. Means हमारे hereditary components ये होते हैं जो हमारे behavior को influence करते हैं. Genes, genetic things. Getting? So lot of hereditary components which influence our behavior. Getting my points? And what about the environmental components? Environmental components means family. Family, after that peer, after that school, religion, media, workplace, all these components play important role in the development of behavior. आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट जैसा होगा आपके बिहेवियर पे सीधा असर पड़ेगा. What about your peers' circumstances? They will definitely influence your behavior. Schoolings, what type of schooling you are taking, that influence your behavior. A religion, जिस तरह के religions को आप follow करते हैं, that will definitely influence on behavior. So behavior is basically product of what? Heredity as well as. And even into NIOS की अगर बुक में आप देखेंगे, so there is clearly mentioned 3 words. Psychology is study about 3 words. One is mental process, and there is the behavior, and there is the environment. Mental process, behavior, and getting. So अब कोई पूछे ये मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर, एनवायरनमेंट हम किसका स्टडी करते हैं? We study the mental process, behavior and environment of an individual and in contemporary. हम किसी का कंटेम्पररी पढ़ते हैं. And right, and based on normatives. तो normatives के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं. Getting? So that I hope I had clear at here, I have well cleared the definition of psychology. If somebody asks what is psychology? Psychology is a study of mental process and behavior. And even you can add experience. Psychology is study of mental process, behavior and experience of an individual.
of an individual. So, what is mental processor? Those processes which are not directly visible. वो process जो सीधा नहीं दिखाई पड़ती. Those processes which are not directly visible, that is mental process. Like what I am thinking, how anybody can know? नहीं जान सकता. What is in my memory, how anyone can understand? What is my perception toward anything, nobody can understand. So, getting, I hope if somebody asks, तो एक question आप लिख सकते हैं, if you want, that is, what is psychology? Psychology is a study of mental process, behavior, and experience. If somebody asks, what is experience? And what is mental process? What is behavior? So, सब words मैंने बता दिया. Mental process means those processes which are not directly visible. Mental processes are the processes which are not direct. Example, all these things are there. And if you will read NCERT की books में बहुत clearly, in the NCERT बहुत clearly इस word को highlighted, that is mental process. And if you will see in the NCERT, तो behavior words को उसमें बहुत अच्छे से highlighted है. So what I want to say? I want to say basically you should follow the government sources. I used to follow totally by the government sources. अब जितना मैंने बताया, you can read that, you can go and आप जाके इसको practice करके देखो. Right? अब इसके आगे जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे या आगे पढ़ेंगे, that is अब इसी दो वर्ड्स, अच्छा थोड़ी सी अगली क्लास की भी पहले पॉइंट और देख सकते हो. If you will apply 2 words, only 2 words. क्या words? That is mental process and behavior. इन्हीं 2 वर्ड से बहुत सारी ब्रांचेस बन जाएंगे. How? If we will study the women's mental process, अगर मैं किसी woman का mental process and behavior समझ लूं, that is called women psychology. अगर मैं किसी क्रिमिनल का मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर समझ लूं, we call them to criminal psychology. Criminal psychology is there. If we study about someone's child's mental process and behavior, that is child psychology. If we study the consumer's mental process and behavior, that will be consumer psychology. So with the help of only these 2 words, you can develop many more branches of psychology. Only 2 words. Even according to APA, more than 56 branches of psychology. जो इग्नूस के बुक्स में लिखे हैं, इग्नूस, EPG पाठशाला and many more, there is 22 branches of psychology. So I hope you get my points. तो 2 वर्ष में पूरी साइकोलॉजी छूटी. आपका सिलेबस तो यही है ना. These are unit perception is unit 5, but perception attention and learning is unit 6, memory is 7, and thinking problem solving is the 8 number, intelligence is 9, intelligence is 10 number, motivation emotion is 9 numbers. So all these are our syllabus. We can follow them. हम इस syllabus को follow करें. So thank you for the class. In the next class we will deal about debates in psychology. There are the 4 major debates in psychology, because without understanding of debates, means first of all we will understand debates. Without understanding of debates, it is very difficult to understand the approaches of psychology. Structuralism से functionalism की तरफ हम जब जाएंगे या मल्टीकल्चरलिज्म तक पहुंचेंगे, सो बिना हमें डिबेट के समझ के हम नहीं पहुंच पाएंगे. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड. हमें इस चीज की जरूर समझो डिबेट्स इन साइकोलॉजी. सो देयर आर द 4 मेजर डिबेट्स इन साइकोलॉजी. दैट द फर्स्ट डिबेट इन साइकोलॉजी, दैट इज डिटरमिनिज्म वर्सेस फ्री विल. सेकंड डिबेट इज that is molecular versus molar.
Third debate is idiographic versus mnemothetic. Fourth debate is empiricism versus nativism. All that debates we will cover in class so that will give you better picture. So thank you for this class, and we will meet again in the next class. So thank you those who are linked with live, those who are watching live, and somebody is saying Jai Hind sir, so Jai Hind, and so thank you.